Captain's Picks. Mahir Ali. Dawn Editorial, English. Published on December 21, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. The BBC this year marked its centenary, an occasion that prompted a plethora of reminiscences, ruminations, plaudits, and brickbats. Both the praise and the criticism are often well-deserved. As an institution, the public broadcaster has always been a part of the British establishment. At least since the Thatcher years, it regularly gets slapped down for deviations from the ruling ideology, and generally prefers to play it safe. That invariably involves tilting its political balance to the right. The union leader Mick Lynch recently called it out, accurately, for taking its cues from the rabidly reactionary Daily Mail. Whatever the extent to which the BBC World Service received its cues from the Foreign Office as an instrument of British soft power, it has over the decades undeniably served a useful purpose in many parts of the world, especially where the local media has been intimidated into conformity or silence. At least 3 of this newspaper's editors were previously stalwarts of the Urdu service, which often offered a lifeline to some semblance of reality in troubled times. Anyhow, no one can seriously deny that the legacy of the BBC's first 100 years includes a fascinating archive of sounds and images. Inevitably, not everything has been preserved, yet, incredibly, recordings of programs considered to have been lost long ago keep turning up in attics and basements. The BBC archive throws up unexpected pleasures. Perhaps the oldest ongoing show is Desert Island Discs, inaugurated 80 years ago. The idea behind it is to invite a guest to share the 8 pieces of music they would take with them if they were to be stranded alone on an uninhabited isle. The show first turned up on the Forces program during World War II, and was resurrected after a brief post-war hiatus. Its host for the first 43 years was Roy Plomley. He wasn't a particularly engaging or empathetic interviewer, but the show was popular enough to survive, and became a lot more interesting when it was passed on in the mid-1980s to Michael Parkinson, briefly, followed by Sue Lawley, Kirsty Young and the incumbent host, Lauren Laverne. Based on the early episodes I've listened to, Plomley showed little interest in delving into the lives of his guests, known as castaways, or in their responses to his questions. Lawley and Young vastly improved the show's template and broadened its scope, inviting castaways from all walks of life who might previously have been considered too controversial, or simply unworthy. And occasionally they teased out scoops from guests who might have been more reticent in the face of aggressive interlocutors. In 1991, Lawley's castaways included a certain cricket captain, perhaps past his prime but still a prominent all-rounder in the London social scene. Asked how he navigated the initial culture shock, Imran Khan says he resisted peer pressure to down a pint, while certain other Pakistani cricketers got sucked in and developed alcohol problems. Later, his reputation as a playboy is also brushed off as speculation. He's never had the time or the money for that, he claims, but admits that one of his closest friends fits the description. The song he chooses to remember this friend by is Elvin Bishop's Fooled Around and Fell in Love. When queried about the English girl he came close to marrying, Imran says that the cultural divide proved impossible to bridge. At 38, he declares he's still not prepared for the commitment that marriage entails. Fewer than 4 years later, he wed the then 21-year-old Jemima Goldsmith. There have been 2 further marriages since they divorced in 2004. Some of the other tracks he chooses might resonate in a different way today. There's Johnny Nash's rendition of Jimmy Cliff's I Can See Clearly Now, to which one can only add, if only. And, linked to a World Cup failure, the Rolling Stones' You Can't Always Get What You Want, which might be worth revisiting. His favorite pick is Pink Floyd's Us and Them, which includes the verses, Forward. He cried from the rear / and the front rank died / and the general sat / and the lines on the map / moved from side to side. Imran says he could meditate to it, were he inclined to meditation. But he won't be doing that on the desert island.
The luxury he chooses to take with him is a shotgun, to target clay pigeons. His favorite pastime. Arguably, the best song he chooses, relating it to a romantic liaison gone wrong, is a version of a Bob Dylan song by the Irish band Them. You must leave now, take what you need / you think will last, it says. But whatever you wish to keep / you better grab it fast. Look out baby, the saints are coming through / and it's all over now, baby blue. Let's see if that realization eventually sinks in. Published in Dawn, December 21, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. 21 दिसंबर 2022। इस साल बीबीसी ने अपनी 100 साला सालगिरह मनाई, एक ऐसा मौका जिसने यादों, अफवाहों, तारीफों और ईंटों की भरमार को जन्म दिया। तारीफ और तनकीद दोनों अक्सर अच्छी तरह से मुस्तहक हैं। एक इदारे की हैसियत से पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमेशा से बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहा है। कम अज कम थेचर के सालों के बाद से यह हुक्मरान नजरियात से इन्हिराफ के लिए बाकायदगी से थप्पड़ मारा जाता है और आमतौर पर उसे महफूज तरीके से खेलने को तरजीह देता है। इसमें हमेशा अपने सियासी तवाज़ुन को दाएं तरफ झुकाना शामिल होता है। यूनियन के रहनुमा मिक लंच ने हाल ही में इसे काल किया, दुरुस्त तरीके से सख्त रजत पसंद डेली मील से इसके इशारे लेने के लिए। बरतानवी सॉफ्ट पावर के एक आले के तौर पर दफ्तर खारजा से बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने जिस हद तक इशारे हासिल किए हैं, इसने कई दहाइयों से दुनिया के बहुत से हिस्सों में एक मुफीद मकसद की खिदमत की है, खास तौर पर जहां मकामी मीडिया को मुताबकत खामोशी से खौफजदा किया गया है। इस अखबार के कम अज कम 3 मुदीरान इससे पहले उर्दू सर्विस के कदावर थे, जो अक्सर मुश्किल वक्त में हकीकत की किसी न किसी झलक को लाइफ लाइन फराहम करते थे। बहरहाल, कोई भी इस बात से संजीदगी से इनकार नहीं कर सकता कि बीबीसी के पहले 100 सालों की मीरास में आवाज़ों और तस्वीर का एक दिलचस्प आर्काइव शामिल है। लामहला, हर चीज़ को महफूज नहीं किया गया है अभी तक, नाकाबिल यकीन हद तक। प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग बहुत पहले खो दिया गया था, 28 और तहने में तब्दील कर रहे हैं। बीबीसी आर्काइव गैर मुतवक्के खुशियां पेश करता है। शायद सबसे पुराना जारी शो डेजर्ट आइलैंड डिस्कस है, जिसका इफ्तिताह 80 साल पहले हुआ था। इसके पीछे ख्याल यह है कि किसी मेहमान को मौसीकी के उन 8 टुकड़ों का इश्तिराक करने के लिए मदऊ किया जाए जो वो अपने साथ ले जाएंगे अगर वो किसी गैर आबाद जजीरे पर तन्हा फंस जाए। ये शो पहली बार दूसरी जंग अजीम के दौरान फोर्सेस प्रोग्राम में शामिल हुआ और जंग के बाद एक मुख्तसर वक्फे के बाद उसे दोबारा जिंदा किया गया। पहले 43 सालों तक इसके मेज़बान राय प्लोमिली थे। वो खास तौर पर मशगूला हमदर्दाना इंटरव्यू नहीं था, लेकिन यह शो जिंदा रहने के लिए काफी मकबूल था, और जब ये 1980 की दहाई के वस्त में माइकल पार्किंसन को मुंतकिल किया गया तो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया। मुख्तसर तौर पर, इसके बाद सोलाली, क्रिस्टियन और मौजूदा मेज़बान लारेन लीवर ने। इब्तदाई अक्सात की बुनियाद पर जो मैंने सुना है, प्लोमली ने अपने मेहमानों की जिंदगियों में डूबने में बहुत कम दिलचस्पी जाहिर की, जिसे कास्टवे के नाम से जाना जाता है, और इसके सवालात के जवाबात में लाली और यंग ने शो के सांचे को वसी पैमाने पर बेहतर बनाया और उसके दायरा कार को वसी किया। जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक रखने वाले कास्टवे को मदऊ किया जो पहले बहुत मुतनाज़ा समझे जाते थे या सिर्फ नालायक थे, और कभी कभार उन्होंने मेहमानों से अस्कोपस को छेड़ा जो जारहाना मुज़ाकरातकारों के सामने ज्यादा खामोश हो सकते थे। 1991 में लाली के कास्टवे में एक खास क्रिकेट कप्तान शामिल था, जो शायद अपने प्राइम से पहले था, लेकिन फिर भी लंदन के मुआशरती मंजरनामे में एक मुमताज़ राउंड था। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने इब्तिदाई सकाफत के झटके को किस तरह नेविगेट किया, इमरान खान का कहना था कि उन्होंने एक पिन को कम करने के लिए साथियों के दबाव का मुकाबला किया, जबकि कुछ दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को चूसा गया और शराब के मसाइल का सामना करना पड़ा। बाद विच प्लेबॉय दी हैसियत तो उन्हें दी साख नोवी कियास आराइयां दे तौर अति मुस्तरद कर दिया गया। उनका दावा है कि उनके पास इसके लिए कभी भी वक्त पैसा नहीं था, लेकिन वो तस्लीम करते हैं कि उनके करीबी दोस्तों में से एक तफसील में फुट बैठता है।
वो गाना जिसके जरिया वो इस दोस्त को याद करने का इंतखाब करता है वो एल्विन बिशप का बेवकूफ़ है और मोहब्बत में गिर गया है। जब उनसे इस अंग्रेजी लड़की के बारे में पूछा गया जिससे वो शादी के करीब पहुंचे तो इमरान का कहना था कि सकाफती तकसीम को ख़त्म करना नामुमकिन साबित हुआ। 38 साल की उम्र में वो ऐलान करता है कि वो अब भी इस अज़्म के लिए तैयार नहीं है जो शादी में शामिल है। 4 साल से भी कम अरसे के बाद उन्होंने उस वक्त की 21 साला जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी की। सना 2004 में तलाक के बाद से अब तक मजीद 2 शादियां हो चुकी हैं। वो जिन दीगर पटरियों का इंतखाब करते हैं इनमें से कुछ आज एक मुख्तलिफ अंदाज में गूंज सकते हैं। जिमी कलफ की मैं वाज़े तौर पर अब देख सकता हूं कि जानी नैश की पेशकश है जिसमें कोई सिर्फ शामिल कर सकता है अगर सिर्फ। और वर्ल्ड कप की नाकामी से मुंसलिक रोलिंग स्टोन्स अब हमेशा वही हासिल नहीं कर सकते जो अब चाहते हैं जो दोबारा देखने के काबिल हो सकता है। इसका पसंदीदा इंतखाब पिंक फ्लाइट का हम और वो है जिसमें आयात शामिल हैं। फॉरवर्ड वो पीछे से रुया स्लैश और सामने वाला दर्जा मर गया स्लैश और जनरल बैठ गया स्लैश और नक्शे पर लकीरें स्लैश एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल हो गई। इमरान कहते हैं कि अगर वो मुराकबा की तरफ माइल होते तो वो इस पर मुराकबा कर सकते थे, लेकिन वो सहराई जजीरे पर ऐसा नहीं करेगा। वो जिस ऐश व आराम को अपने साथ ले जाने का इंतखाब करते हैं वो एक शॉटगन है जिसका मकसद मिट्टी के कबूतरों को निशाना बनाना है। इसका पसंदीदा मशगला मंतकी तौर पर वो जिस बेहतरीन गाने का इंतखाब करता है इसे रोमांटिक राब्ते से मुताल्लिक गलत हो गया है। वो आयरिश बैंड उनके बॉब डीलन गाने का एक वर्जन है। आपको अभी जाना चाहिए जो आपकी ज़रूरत है ले लो स्लैश आपको लगता है कि आखिरी हो जाएगा इसमें कहा गया है, लेकिन जो कुछ भी आप रखना चाहते हैं स्लैश अब बेहतर उसे तेजी से पकड़े। बच्चे को देखो सुन्नतों के जरिए काम कर रहे हैं स्लैश और ये सब अब खत्म हो गया है बच्चे नीले रंग। आइए देखते हैं कि आया ये एहसास आखिरकार डूब जाता है या नहीं। डॉन अखबार में शाये शुदा 21 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.